संघर्ष भरा छठा दिन। सबना मेरी राम राम, सारी मेरी बाण बोबोना। सुबह के बज रहे 7:30, बढ़िया सूरज खिल रहा, बढ़िया सब कुछ। मैं जमी खतरे का खिलाड़ी बन रही, हवा भी चल रही, बिना स्वेटर के बैठी, बिना जैकेट के बैठी। आज पहला मैंने उठ कर पूजा करी, पूजा करके अपना ईब में अपनी चाय का कप ले आई, चाय पी का फिर और किसी काम में लगूंगी। उज्जवल तो रात अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे बच्चे, तो नहीं, और फिर देखूंगी क्या होएगा। चाय की घूट भरूंगी बाद में, थरते पहला राम राम करका। लोगों के पास संडे होता है रिलैक्स करने के लिए, मेरे पास होता है संडे कि भाई काम बढ़ाने के लिए। झाड़ू पोछा, अभी बजे हैं 10:05 होगी, और मेरे पास ऑर्डर थे कि आलू गोभी बनाना आज। आलू गोभी के साथ दाल मखनी बनाई हो, दाल मखनी के साथ अच्छे से जीरा पुलाव भी बनाई हो मम्मी, और क्या थे आलू गोभी के सब्जी के साथ पराठे प्लेन, ऐसे ये ऑर्डर था। और साथ में और क्या काम था, कई सारी चीज़ें। आज पुदीने वाली सिकंजवी पीनी थी, और मतलब कई चीज़ें मेरे ते काम बता रखा भी यू हमारे लिए कर दियो। और दही का आज मिठा रायता चाहिए ना, वो बनाना। ये काम पर लगी पड़ी, 10:05 होगी। झाड़ू दे ली थी वैसे तो मैंने एक बार बोर्ड कर दूँ फिर, क्योंकि मैंने आटा उटा बदलिया था तो आटा गिर गया, दोबारा दूँ। दाल मखनी बिल्कुल तैयार, आलू गोभी बिल्कुल तैयार। आज फिर मैं जयपुर एंजेलिना के घर आ रही, उनसे 1-2 रेसिपी सीखना, जो इनकी अपनी रेसिपी है, और वो सीखूंगी। फिर देखते हैं कैसे बनेगी। American casserole. It's got chicken, vegetables, cream cheese. टलून मजे, ये टलून चूल्हा है। पता नहीं कौन सा Lula. Moo! I can do it again Safest for you if place. you want. Do you want me to do it again? Yeah. Okay. Movie gets to do it once. Would you like to try? Whoops. Oh. Okay. Okay. Tell her to sit. 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 Okay, good baby. Now shake her little paw. Say shake. Shake. Sit. Shake. Nope, that's okay. She did it. And then walk away from her and tell her to stay. Yep, you can stand up. Stay back. She's not okay. That's okay. So go ahead and stand up. Stand up. Yep. Okay. Now walk away and tell her to stay. 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 And walk backwards. Stay. And then tell her to come to you. Say come. Say come. Come. Yep. Come. Taluna, come. Put the treat down closer. Come. Come. There you go. Go. Good job. Do it in one day most of the time, because I started this loaf yesterday morning as well. Okay. Here, might as well see it. So yesterday morning I pulled my starter out of the fridge. I'll show you my starter too. And I turned it into, we start with starter, Okay. and it sits out on the counter for 2 hours to get to room temperature. Okay. And then however much there is in volume, I add that much more flour and water. Okay. And that's how, because this is alive, it has enzymes in it. And then those enzymes are going to eat that flour and that water. It's how it stays alive. This is a cloth top. It's not
it's not a sealed top, so that it can actually breathe because it is alive. And so then once it has eaten and doubled in size, then I measure off 1/4 cup of this, and I put it in my bowl. In my bowl, I add 4 cups of flour, 2 cups of water, and 1 tablespoon of salt, and I mix it up. And then I do this tug process that you just saw a moment ago, where I scoop up one edge, and I pull it up, and I fold it over, and I do that on all 4 sides. And so it looks like this. And then I get my linen wet to keep the moisture in so it doesn't dry out. And I let it sit for an hour at a time. And I want to do that pull process and keep it covered with the cloth at least 4 times, but ideally 6 times. And once it's been done 4 to 6 times, then it's ready to be baked. So I put it into my Dutch oven. This is a Dutch oven right here. Okay. So that's my Dutch oven. It's dirty right now. I haven't washed it from the last one yet. I'll wash it soon. It's okay. And it bakes for an hour. When you put it in there, you actually sprinkle it with water before you bake it. The water creates steam, which keeps your crust soft. Otherwise, you get too hard of a crust. And that bakes 35 minutes with the lid on, 10 minutes with the lid off, and then you have this really nice, wonderful sourdough. So I started both of these yesterday morning, and I got this one baked first thing this morning. So I let it rise overnight while I slept, and I woke up this morning, I threw this one in the oven, and it baked while I got ready for the day. And then we ate it for breakfast before we even left for church this morning. But I didn't have time to bake 2 this morning, and so this one still needs to be baked. But we baked lunch, and now we're baking dessert, so it'll get baked next. Okay. We use the same cloth for making paneer. Oh, very good. Yes. We use the same cloth. Yes, cheesecloth. Okay, Is cheesecloth. one of the terms for it. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Silicone mat. It's going to go in my nice, clean Dutch oven. So I put that down first. And you can fold, or you can call it hug and tuck, the dough. So I'm going to do all 4 sides of the dough here. I use the spatula to help me lift it. And I pull and fold, and I'm going to do that on 4 sides. Then I'm going to take a pair of scissors. These are kitchen scissors. Cuts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And that's part of how it has room to expand. And then I'm going to take, when it's cooking, the crust doesn't get too hard. And then I put the lid on. Lid on. And that will go in the oven. 35 minutes with the lid on. 10 more minutes. Apple crisp here. We will have a baking sheet underneath the big pot to keep from there being too much heat on the bottom. And today at 9, and then all that lovely crunchy topping on there. Let's see if the apples are tender when I stab them with a fork, or if they're firm. We want tender. And yes, that's very tender. So I would say that apple is done. Kind of peek at the topping. It's safe to touch, and you can feel how heavy that is. Oh my God. It is very heavy. Around 10 to 15 kg? I don't know. Jeff, how heavy do you think that the Dutch oven with the bread in it is? I would guess the Dutch oven is about 5 pounds. Yes, same. Same. संघर्ष भरे छठे दिन का एंड कर रही। आज दिन में जो खाना मैंने बनाया था, आलू गोभी की सब्जी थी, अपना दाल मखनी थी, ये सारी चीज़ें बनाकर फिर मैंने रायता रूता बनाया। फिर जेफ और एंजलिना और उनका बेटा ट्रेंट आ गए थे, मैंने अपने घर लेकर गए। फिर हम उनके घर जाकर फिर मैंने उन पे सीखा ब्रेड बनाना, और साथ में उन्होंने मेरी आलू गोभी की सब्जी पराठे खाए। एक इनकी ना एक
चिकन की रेसिपी थी, कैसरोल ही ना बोलिया था जब मैं पिछले साल आई थी, जब मैंने खड़ाई थी, अच्छी थी, बहुत टेस्टी लगी थी। मैंने वो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सर्च करी थी भी कोई कैसरोल की रेसिपी क्या है, मिली नहीं थी। जी भी हम यहाँ मेरे घर आए थे नवंबर में, इंडिया आए थे एंजलिनो, तब मैंने इनते पूछा भाई वो के थी रेसिपी, तो इन्हें बताया कि वो तो हम भाई हमारी खुद की रेसिपी है, हम बनावा उसना। फिर इंडिया में तो हमारे घर में ओवन होंगे नहीं, तो वहाँ आया बना नहीं सके, इवी आया का मैंने इनते कहा था मैंने सिखाई हो, आज इन्हें मेरे बनाना सिखाई, सिखा का भी अच्छा लगा, मैंने खुद बना कर भी खुद बना रही थी तो मैंने और ज़्यादा टेस्टी लगी वह। फिर एक और एप्पल ते हैं स्वीट डिश बनावा, वह भी मैंने लास्ट ईयर किसी और के घर खाई थी, वह भी अच्छी थी, वह भी सीखी मैंने आज, बड़ा बढ़िया लगा। फिर एक ब्रेड बनाना सीखा, बढ़िया लगा। फिर इनके घर बैठे, कई बार बोल दिया मेरा बढ़िया लगा बढ़िया लगा, हाँ फिर बढ़िया लगा तो भी अच्छे से बोल लूँगी बार बार, ये सब चीज़ें सीख कर फिर कहूँगी बढ़िया लगा। फिर मैं अपने घर आई, घर आकर समेटा समुटा देखा सब कुछ। उज्ज्वल और प्रज्ञा आज मेरे साथ नहीं गए थे, मैं कल ही गई थी उनके घर, थोड़ी देर गेम घूम, क्योंकि इनके वाइट लोगों के यहाँ के हुआ कि गेम घूमिए खेलना बहुत पसंद करा। वह गेम भी कोई गेम का नाम था सॉरी उन्होंने मेरे ते दी, एक तरीके से अपनी लूडो गेम थी, बट उसमें बहुत सारे रूल्स थे लूडो के अलावा, वह थी। फिर आका हो रहा है अपना काम कुम समेट लिया, रात के बज गए 10, मैं आज जल्दी सोना चाहूँ तो सब ना रात की नमस्ते कर सोऊं, तड़की देखते हैं 7वां दिन कैसा होएगा। और कल और बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है, 40 साल के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण है, देखते हैं क्या होएगा उस सूर्य ग्रहण पर। और परसों तो मेरे नवरात्रे शुरू, मैं अपने 2 ही व्रत रखा करूँ नवरात्रों के, और मैं ना कोई व्रत ना मैं रख दी ना मना, पता नहीं यार नवरात्रे में ना ऑटोमेटिकली रखना अच्छा लगा, फिर मैं नवरात्रे रखूँगी और अपनी अखंड ज्योत भी जलाऊँगी। लेकिन थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि लकड़ी के घर है, माता रानी सब भला करेगी, देखते हैं। धन्यवाद।